फैसला दे दिया कि काउंट भी नहीं होगा और रुकनीत भी जाएगी, और कहा कि वो पहला फैसला हमसे गलत हो गया। तो इस तरह की मुतनाज़ा फैसले करने वाली अदालत, आइन री राइट करने वाली जजेस, बिलखसूस चीफ जस्टिस, उनकी वजह से मामला उलझ गए। बहुत शुक्रिया सदीकुल फारूक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया, कीमती राय से आगाह किया। तैमूर तालपुर भी हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। वीडियो कॉलिंग हो या नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग, अब मिलेगा मोर से ज्यादा डेटा विद वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर, जो दे 80 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर मिनट्स और 300 अदर नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 380 रुपए में। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर कर दिया जाए। जी बिल्कुल, शाकिर अब्बासी हमारे साथ ही रहिएगा, मजीद तफसीलात भी आपसे जानेंगे। निसार आबिद भी हमारे साथ मौजूद है। केस को समाप्त कर लिया जाए। जी बिल्कुल, शाकिर अब्बासी से शुरू होना भी बड़ा जरूरी है। तो आज एक किस्म का एक लाइन ऑफ एक्शन तो आज आनी चाहिए ताकि शेड्यूल को जारी किया जा सके। बर वक्त 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने के लिए कल नोटिफिकेशन आना जरूरी है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। जी बिल्कुल, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो है वो एक लाइन ऑफ एक्शन आनी चाहिए ताकि जो है वो क्लियरिटी हो चीज़ों में, क्योंकि आरओ और डीआरओ की जब तैनाती होती है उनकी ट्रेनिंग होती है। आरओ की जो ट्रेनिंग होती है 3 दिन की और डीआरओ की 1 दिन की ट्रेनिंग होती है। तो ट्रेनिंग का अमल जो है वो 1 दिन का जो है वो हो गया था, लेकिन 2 दिन अभी बकाया थे। तो अभी 3 दिन का ट्रेनिंग का अमल भी जो है वो पूरा नहीं हुआ था कि इतने में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया था। तो अब जो है ये एक पेचीदा सूरत हाल क्रिएट हो गई है। अब भी अगर फैसला लाइन ऑफ एक्शन कुछ दिया जाता है तो मे भी ये जो है वो यहाँ पर अगर आरओ और डीआरओ के हवाले से जो कोई हतमी फैसला आता है तो उस हवाले से उसके बाद उनकी ट्रेनिंग का अमल होगा। फिर जो है क्योंकि आरओ डीआरओ ने जो है वो क्योंकि उनकी तैनाती के बाद ही जो है इंतखाबी शेड्यूल जारी होता है, क्योंकि उन्हें कागजाती नामजदगी जो है वो जमा करने होते हैं। तो ये एक जो है वो चीजें यहाँ पर चल रही हैं। तो क्योंकि इसी सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से ये मामला टेकअप किया है। जी और बिल्कुल शाकिर, हमें बताइएगा क्या सदर मुमलिकत को भी इस मामले में लिया जा रहा है कॉन्फिडेंस में, क्योंकि लास्ट टाइम अगर याद किया जाए तो सदर मुमलिकत इलेक्शन कमीशन के चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और चीफ जस्टिस में एक कंसेंसस पाया था इस पूरी तारीख के अमल को लेके। तो आज अगर दोबारा इसको रीटेक किया जा रहा है तो सदर मुमलिकत के कोई इम्कान है कि उनको भी कॉन्फिडेंस में लिया जाएगा दोबारा? देखिए, सदर मुमलिकत के जो इख्तियारात थे वो इंतखाबी जो डेट थी वहां तक थे। इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से इलेक्शन कमीशन जो है अब उसके पास इख्तियारात होते हैं। तो सदर को इस हवाले से कॉन्फिडेंस में लेने का अभी कोई आप हालात नजर नहीं आ रहे, या कॉन्फिडेंस में लिया जाना कोई कानूनी अमल जो है वो उसमें नहीं आता, क्योंकि इंतखाबी उनका जो इंतखाबात की तारीख थी उसकी मुशावरत के हवाले से जो है वो कुछ कानून में और आइन में है कि सदर से मुशावरत की जाए। तो उस हवाले से, लेकिन इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से वो इलेक्शन कमीशन का अपना स्वाबदीदी इख्तियार होता है। उसमें आपको पता होता है कि प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले कागजाती नामजदगी जमा करवाए जाते हैं, उसके बाद उनकी स्क्रूटनी होती है, फिर एक इब्तदाई फहरिस्त लगती है, फिर जनाब उसके बाद जो इब्तदाई फहरिस्त के बाद उसके ऊपर अपीलें दायर होती हैं किसी अगर उम्मीदवार पे इतराज़ात हों, फिर उसके बाद जो है वो हतमी फहरिस्त होती है, फिर इंतखाबी निशान लाट होते हैं। तो तमाम तर प्रोसेस जो है वो इलेक्शन कमीशन के स्वाबदीद है कि इंतखाबी शेड्यूल के हवाले से जो इंतखाबी शेड्यूल होता है वो इलेक्शन कमीशन की खालिस्तान स्वाबदीद है। जी बिल्कुल शाकिर, और अगर आज की समात के हवाले से हमें बताएं किन लोगों को फरीक बनाया गया है, फरीकैन के बारे में हमें अपडेट करें, क्योंकि एक टाइम था कि बहुत सारी सियासी जमातें थीं जो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने से ज़रा गुरेज करी थी, लेकिन अब बज़ाहिर नज़र ये आता है कि वही जमातें चाह रही हैं, बल्कि फरीक बनना चाह रही हैं कि हम इलेक्शंस की तरफ जाएं और 8 फरवरी को इलेक्शंस हो। उन फरीकैन के बारे में बताएं। देखिए, फरीकैन के हवाले से ये कहा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है उस हवाले से वो फरीक बनने के लिए तैयार हैं, जिसमें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके अलावा दीगर जो सियासी जमातें हैं वो फरीक बनने के लिए तैयार हैं। ये तमाम तर सियासी जमातें फिलहाल ये चाह रही हैं कि जो इलेक्शन शेड्यूल है उसको फिलहाल जारी किया जाए और इंतखाबी जो अमल है वो 8 फरवरी को ही जो है वो पूरा हो। उस हवाले से जो गोई हैं या जो तशवीशनाक सूरत हाल पैदा हुई है उसको खत्म होना चाहिए। तो तमाम तो बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस हवाले से फरीक बनने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, और शाकिर हमें बताइएगा, क्योंकि आप सारा दिन वहाँ पे मौजूद भी रहे हैं, कि चीफ जस्टिस के पास चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाते हैं और बहुत कम हमने ऐसे देखा है कि हंगामी बुनियादों पर समात उसी दिन रख ली जाए चीफ जस्टिस की जानिब से। बज़ाहिर नज़र तो ये आता है कि एक बहुत बड़ा मैटर है इलेक्शन, और जिस तरह से पहले चीफ जस्टिस ने कहा था कि 8 फरवरी से ना एक दिन आगे जाएंगे ना एक दिन पहले जाएंगे, उसी वर्डिक्ट को लेके ये आज दोबारा एक दफ़ा री अनाउंस किया जाएगा। इम्कानात क्या है उसी चीज़ को आगे लेके जाया जाएगा, 8 फरवरी की तारीख को हतमी शक्ल दी जाएगी एक दफ़ा फिर?
देखिए बिल्कुल 8 फरवरी की जो तारीख है उस हवाले से कोई सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह इंस्ट्रक्शन है, जैसे कि आप 24 दिन के अंदर जो है इंतखाबी शेड्यूल उसका कम से कम दुरानी होना चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास ऑप्शन होता है कि मिनिमम 45 दिन का भी वो इंतखाबी शेड्यूल। बिल्कुल शाकिर अब्बासी, बहुत शुक्रिया, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतल्लिक जजेस को आगाह किया। आम इंतखाबात केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात केस की समाअत के लिए आज ही बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात से 54 रोज़ कबल इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने आरओज़ टीआरओज़ की तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट्स के फैसले चैलेंज करने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा, जबकि ज़राए सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर शामिल हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और IPP का लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के केस में पार्टी बनने का फैसला। आसिफ अली जरदारी का फौरी पेटिशन फाइल करके फरीकैन बनने का और फरीक बनने का फैसला किया गया है। सुप्रीम कोर्ट भी फरीक की ज़रूरत पड़ी तो पेटिशन फाइल करेंगे। PP क़यादत को कानूनी टीम की हदायत की गई है। और आपको बताते चलें कि मुल्क में आम इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़। सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया है। अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद में चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की यहाँ मुलाकात हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतल्लिक जजेस को आगाह किया। आम इंतखाबात केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आम इंतखाबात केस की समाअत के लिए आज ही बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है, जबकि 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात से 54 रोज़ कबल इलेक्शन शेड्यूल जारी होगा। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। आपको बताते चलेंगे, इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट्स के फैसले चैलेंज करने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिया जाएगा, जबकि आम इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात के खिलाफ दरख्वास्त पर लार्जर बेंच तश्कील दिया जाएगा। जस्टिस अली बाकर नजवी की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 18 दिसंबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस शहराम सरवर चौधरी, जस्टिस सरदार सरफराज डोगर शामिल हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस सुल्तान तनवीर और जस्टिस जवाद हसन भी बेंच का हिस्सा होंगे। सिंगल बेंच ने इंतखाबात के लिए ब्यूरोक्रेसी की खिदमात लेने का इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग काफ, पीपल्स पार्टी और IPP का लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात के केस में पार्टी बनने का फैसला। आसिफ अली जरदारी का फौरी पेटिशन फाइल करके फरीक बनने का फैसला। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में भी फरीक की ज़रूरत पड़ी तो पेटिशन फाइल करेंगे। PP क़यादत को कानूनी टीम की हदायत, जबकि मुल्क में आम इंतखाबात में ताख़ीर किसी सूरत बर्दाश्त नहीं, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ था। सुप्रीम कोर्ट में कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया है। आपको अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतल्लिक जजेस को आगाह किया। आम इंतखाबात केस आज ही हंगामी बुनियादों पर समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। आम इंतखाबात केस की समाअत के लिए आज ही बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। 8 फरवरी 2024 को इंतखाबात से 54 रोज़ कबल इलेक्शन शेड्यूल जारी होना है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल शेड्यूल जारी करना पड़ेगा। गुज़श्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन ने ROs DROs की तरबियत रोक दी थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाई कोर्ट्स के फैसले चैलेंज करने का इम्कान था। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले चैलेंज करेगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर ही बेंच तश्कील दिए जाने का इम्कान है। अहम खबर के हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है, जिसके हवाले से आपको अपडेट करते चलें और आपको बताते चलें कि अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट किया जा रहा है। अपडेट करते चलें, इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में मुलाकात हुई है और आपको बताते चलें इस खबर के हवाले से कि
इस्लामाबाद में आपको अपडेट किया जा रहा है एक अहम खबर के हवाले से। इस्लामाबाद में चीफ जस्टिस पाकिस्तान से चीफ इलेक्शन कमिश्नर की अहम मुलाकात हुई है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल से मुतल्लिक जजेस को आगाह की दावत जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान की दावत पर जो है वो यहाँ पर बुलाई गई। कल से जो चेमगोइयां की जा रही थी कि शायद लाहौर हाई कोर्ट से जो अहमाद सामने है उसके बाद इलेक्शन कमिश्नर जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगा, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर किसी तरह की कोई दरखास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर नहीं की जा सकी थी। उसके बाद जो है वो 8 फरवरी से मुतल्लिक जो वाज़ेह अहकामात थे सुप्रीम कोर्ट के जो ये इलेक्शन है ये 8 फरवरी से ना आगे होंगे ना पीछे होंगे। उसके बाद जो है ये मामला भी जेर बहस आया कि जो फंड्स हैं वो जारी हुए हैं या नहीं हुए हैं। इसी तरह जो आरोज का मामला था जिसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उसके हवाले से भी जो तमाम तर तफसीलात थी वो तमाम जो है वो डिस्कस करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चीफ जस्टिस पाकिस्तान के पास पहुंचे हैं। अभी जो ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उसमें लाहौर हाई कोर्ट के जानिब से जो रिटर्निंग अफसरात की तैनाती करार देने का जो मामला था उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीनियर तरीन जजेस से इस वक्त जो मुलाकात है चीफ जस्टिस की वो जारी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इंतखाबी सूरत हाल जो है उससे भी आगाह किया है। ज़राए के मुताबिक जो सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इंतखाबात से मुतल्लिक आज जो अहम फैसला है वो भी मुतवक्की होने जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के बाद जो है मुशावरत जारी है। ज़राए के मुताबिक जजेस के इजलास के बाद किसी भी वक्त जो अदालत है वो लगाए जाने का इम्कान है। आम इंतखाबात जो 8 फरवरी को होने हैं तो इलेक्शन कमीशन को आज या कल इलेक्शन जो शेड्यूल है वो भी जारी करना होगा। आईनी और कानूनी तौर पर इंतखाबी शेड्यूल जो है वो 54 दिन का होता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 फरवरी को इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। इंतखाबी शेड्यूल के मुताबिक 17 दिसंबर पहला दिन और 8 फरवरी 54वां दिन जो है वो बनता है। लाहौर हाई कोर्ट ने बुध की रात जिला इंतजामिया अफसरान को DOROs और तैनात करने से जो है वो रोक दिया था। लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के बाद गुज़िश्ता रोज इलेक्शन कमीशन ने ROs और DOROs को मुल्क भर में तरबियत जो है वो रोक दी थी। सबसे बड़ा सवाल यह था कि इंतखाबी शेड्यूल जारी होगा तो कागजात नामजदगी कौन देगा और कौन वसूल करेगा। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्मनामे के बाद पैदा होने वाली जो सूरत हाल है उस पर जो अहम इजलास है वो इस वक्त जारी है। आम इंतखाबात केस आज समाअत के लिए मुकर्रर होगा या नहीं होगा। आम इंतखाबात के हवाले से 1.5 घंटे से ज्यादा जो है वो ये मुलाकात चल रही है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से हाईकोर्ट के फैसले चैलेंज करने का इम्कान है। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले जो है वो चैलेंज करेगी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से अपील आने पर जो है वो बेंच तश्कील दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मुमकिन तौर पर आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो दरखास्त दायर करेगी। इसके बाद जो है वो केस समाअत के लिए जो है वो सुना जाएगा। इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौजूदा सूरत हाल है उसमें जो है वो अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट में जो है वो लाइट्स भी जलाई गई। कमरा अदालत खोला गया, उसकी लाइट जलाई गई। ताहम वो दोबारा जो है वो कमरा अदालत को बंद कर दिया गया। इसी तरह जो है वो इस वक्त लाइट्स जल रही हैं। जो पुलिस की नफरी मौजूद होती है नॉर्मली वो इस वक्त मौजूद है। जो सहाफी हैं, बीट रिपोर्टर्स हैं, वो इस वक्त बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। अदालती जो अमला है उसमें से भी कुछ अफराद जो हैं वो अभी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होते हुए नजर आए हैं। लाहौर हाईकोर्ट के सिंगल बेंच ने इंटरम ऑर्डर जारी किया था। ROs और DROs की तैनाती को कलअदम करार दिया था। उस मामले पर जो चीफ जस्टिस के साथ इस वक्त मुशावरत है चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वो जारी है। जी बिल्कुल निसार, और हमें ये भी बताइएगा कि अब से कितनी देर कबल में अभी जो समाअत है उसका आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि पूरी कौम को बेसब्री से इंतज़ार है और वोटिंग का जो हक होता है, वोटिंग का जो राइट होता है वो एक आम सिटीज़न का अपना फंडामेंटल राइट्स में गिना जाता है। तो लोगों को तो बेसब्री से इंतज़ार है। कब तक ये समाअत शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है गैर मामूली सूरत हाल देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनसे भी हमने बात की। उनका भी ये कहना था कि आज ही इसकी समाअत होगी। ताहम हमारी जो अदालती कोई अमला है उससे ये कंफर्म नहीं हो सका, क्योंकि तमाम लोग जो है वो इस वक्त अपनी अपनी उस जगह पर पोजीशंस पर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में जो अहम मुलाकात चल रही है चीफ जस्टिस और चीफ जस्टिस पाकिस्तान और इसके अलावा जो है वो अटॉर्नी जनरल और 2 सीनियर जजेस के साथ उस मुलाकात में ये देखना होगा। उसमें से अभी तक कोई ऐसी जो है वो हमारे सामने नहीं आई, लेकिन आज जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है वो यहाँ पर जो मौजूद है, लगता ये है कि आज ही जो है वो अपनी पिटीशन लेकर सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और आज ही इस पर समाअत होगी। क्योंकि मैं बताता चलूं कि अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अमला भी अदालत में इस टाइम मौजूद है। इस अहम मुलाकात के बाद ये लेटेस्ट अपडेट है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक जब सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इससे मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं।
सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अमला भी अदालत में मौजूद है। अहम डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का यह भी कहना था कि 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता, जबकि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में मौजूद हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अमला भी अदालत में मौजूद है। आपको इस हवाले से यहां पर बताते चले कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली है। कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में इस दरखास्त को दायर किया जाएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने यह मौकिफ अपनाया है। उनसे जब सवाल पूछा गया कि 8 फरवरी को इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं, तो उन्होंने कहा कि इससे मुतालिक अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में पहुंच चुके हैं, वहां पर मौजूद हैं, जबकि सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अमला भी अदालत में मौजूद है। आज एक अहम मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जिसके बाद अब ये चीज सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अभी कुछ नहीं कह सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में मौजूद हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट अमला भी अदालत में मौजूद होगा। आपको इस हवाले से बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर करेंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता, ये उनका कहना था। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में मौजूद है, जबकि इसके साथ साथ सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अमला भी अदालत में मौजूद है। अहम डेवलपमेंट है जिसके हवाले से आपको यहां पर बताते चलें, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक जब उनसे सवाल पूछा गया तो उनका कहना था कि इस हवाले से अभी कुछ नहीं कह सकता। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में मौजूद सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट अमला भी अदालत में मौजूद है। आपको इस हवाले से यहाँ पर बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। और 8 फरवरी के हवाले से जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि इससे मुतालिक अभी कुछ नहीं कह सकता। अब की सूरत हाल अगर आपके साथ शेयर करें तो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमरा अदालत में इस टाइम मौजूद हैं। सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट का कमरा अदालत नंबर 1 खोल दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का अमला भी अदालत में मौजूद है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के लिए पिटीशन तैयार कर ली। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से जब सवाल किया गया 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक तो उनका कहना था कि इस हवाले से अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। जबकि इसके साथ साथ आपको अपडेट करते चलें कि आज एक अहम मुलाकात हुई है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, जिसके अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उनको मुल्क में आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से जो उसकी सूरत हाल थी उसके हवाले से अपडेट किया। साथ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बताया कि लाहौर हाई कोर्ट में एक केस जो है वो ज़ेर इल्तवा है, जिसके लिए 18 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की गई है। और इसके बाद अब ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन की इस गुफ्तगू के बाद केस आज ही जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर
उसको समाअत के लिए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। केस जो इलेक्शन के हवाले से था, इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन के लिए पिटीशन तैयार की है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कुछ देर बाद दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर देंगे। और आपको बताते चलें कि दरख्वास्त जो है वो बाकायदा तौर पर दायर कर दी गई है। 8 फरवरी को इंतखाबात से मुतालिक अभी जो है वो उनका कहना था कुछ नहीं कह सकता। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अब तक की ये अहम खबर है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। आपको बताते चले कि इलेक्शन कमीशन की नुमाइंदगी सुजील सवाती करेंगे। क्या आज ही समाअत होगी सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का सवाल पर? इंशाअल्लाह में जवाब इलेक्शन कमीशन लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करे, यह इस्तदा की गई है। आपको इस हवाले से बताता चले कि इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाईकोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा सामने आ चुकी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है इसको चैलेंज कर दिया गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट लेते हैं। नुमाइंदा कैपिटल टीवी निसार आबिद हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। जी निसार आबिद, अपडेट कीजिएगा। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है, क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है? जी देखें, इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। अब से चंद जो है मेरे पहले इलेक्शन कमीशन में जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सहाफियों ने जो है उनसे सवालात की बौछार कर दी। दरख्वास्त जो है उन्होंने कहा कि हमने तैयार कर ली है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ये भी कहा कि कुछ देर बाद सुप्रीम कोर्ट में जो है वो दरख्वास्त दायर कर दी जाएगी। जो सुप्रीम कोर्ट में जो है 8 फरवरी के इंतखाबात से मुतालिक अभी कुछ कह नहीं सकते। सहाफियों ने सवाल किया जिसमें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, डीजी ला, इलेक्शन कमीशन समेत तमाम जो आला हुकाम है इस वक्त इलेक्शन कमीशन के वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए हैं। सीनियर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो भी सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर पहले पहुंचे। इलेक्शन कमीशन का अमला जो था वो भी जो है वो पिटीशन की कॉपियां लेकर सुप्रीम कोर्ट में अब से कुछ देर पहले पहुंचा। उसके बाद जो इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मुतल्लिका ब्रांच से राब्ता करने के बाद जो है वो कोर्ट रूम नंबर के बाहर जो है वो इस वक्त मौजूद है। इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन दरख्वास्त दायर करने के हवाले से जो है वो इलेक्शन कमीशन की टीम ने जब सुप्रीम कोर्ट की मुतल्लिका ब्रांच को आगाह कर दिया था, जिसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो चैलेंज कर दिया। अब से कुछ देर के बाद जो है सुप्रीम कोर्ट कमरा नंबर 1 के अंदर जो है उसकी समाअत होगी। और उससे पहले मैं बताता चलूं कि कमरा नंबर 1 में जो है वो 3 कुर्सियां जो है वो अभी लगा दी गई हैं। ताहम ये अभी तक जो है वो तयन होना बाकी है कि इन 3 जो रुकनी बेंच है इसमें कौन कौन शामिल होगा। ताहम जो 3 कुर्सियां वो कमरा अदालत में लगा दी गई हैं और जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो इस कमरा अदालत के बाहर अपनी कानूनी टीम के साथ मौजूद है। उनके साथ जो है वो सेक्रेटरी ला और दीगर जो अल्लाह हुकाम है वो भी, और अभी जो है दौराने जो है वो कॉल जो है वो इस वक्त अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान जो है वो भी इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे हैं। उनके साथ भी जो है खासी जो है वो तादाद वकला की इस वक्त मौजूद है। इस वक्त इलेक्शन कमीशन वो ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। उनके साथ जो उनकी कानूनी टीम है जिन्होंने अब से कुछ देर पहले जो इलेक्शन कमीशन ने जो है लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अभी 3 कुर्सियां जो कमरा अदालत नंबर 1 में लगा दी गई हैं और अभी ये तयन होना बाकी है कि इन 3 रुकनी जो बेंच है उसमें कौन कौन शामिल होगा। जबकि जो इलेक्शन कमीशन का जो अमला है वो इस वक्त मौजूद है। सेक्रेटरी जो है इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान, डीजी ला, इलेक्शन कमीशन जो है वो इस वक्त मौजूद है। जी अच्छा निसार आबिद, ये भी बताइएगा चूंकि आप वहां पर मौजूद हैं तो क्या अभी हम देख रहे थे कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो थे वो मीडिया नुमाइंदगान के सवालात के जवाब भी दे रहे थे, तो पिटीशन में इस्तदा क्या की गई है? क्या इस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कोई लबकुशाई की है? जी बिल्कुल, इस हवाले से सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने किसी तरह की कोई लबकुशाई नहीं की। ताहम उनसे बार बार ये सवाल पूछा गया कि आपकी जो पिटीशन उसकी प्रेयर क्या है, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बताते हैं, आपको बताते हैं। इसी तरह जो है कि क्या ये को हो सकेंगे जिस पर जो है वो बेहतरी की उम्मीद करें, देखते हैं। इसी तरह जो उनसे पूछा गया कि आप इस वक्त पिटीशन लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में आए हैं तो आपको क्या लगता है कि आप किस प्रेयर के साथ हैं? उन्होंने कहा कि ये अभी हम बताते हैं, अभी तक इस प्रेयर का वो पता नहीं चल सका है, लेकिन अभी जो है पिटीशन दायर कर दी गई है। अब से कुछ देर बाद जो है बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर जब कार्रवाई होगी तो देखा जाएगा कि इस्तदा क्या की गई है इस पिटीशन के अंदर। अभी कुछ सेकंड पहले जो है मेरे सामने से जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उस्मान जो है वो यहाँ से कमरा अदालत 1 की तरफ गुजरे हैं। उनके साथ खासी जो तादाद थी बुकला की 10 से 12 जो बुकला है वो भी इस वक्त कमरे अदालत
जो है वो यहाँ से गुजर के पहुंचे हैं। अब देखना होगा कि जो पिटीशन इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो दायर की है उसमें जो है वो इस्तदा क्या की गई है, ये अब से जो है उसके बाद इसका हमें पता लगेगा। अच्छा निसार आबिद, ये भी बताइएगा कि क्या कोर्ट नंबर 1 के अंदर सहाफ़ियों को या जो दीगर साइलीन हैं उनको और वकला को जाने की इजाज़त, ज़ाहिर वकला को तो होगी, क्या सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है? जी बिल्कुल, ये कोर्ट रूम नंबर जो 1 है जिसमें चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फाइज ईसा जो केसेस चीफ जस्टिस जिसमें होते हैं, अब वो तमाम केसेस कोर्ट रूम नंबर 1 में जो है उसकी समाअत होती है। और सुप्रीम कोर्ट रूम नंबर जो 1 है इसके अंदर तमाम सहाफी जो होते हैं वो तमाम केसेस के अंदर मौजूद होते हैं, मगर उनके जो मोबाइल फोन्स हैं वो जो है वो कानून है सुप्रीम कोर्ट का उसके मुताबिक बाहर जमा कर लिए जाते हैं। और तमाम सहाफी जो है वो अपना जो है वो अंदर मौजूद होते हैं और पूरी कार्रवाई को देखते हैं और बाहर आके जो है उसको फिर अपने जो है वो रिपोर्ट करते हैं। तो इस हवाले से जो वकला इस वक्त गए हैं वो भी कमरे अदालत में जा रहे हैं मेरे सामने, और इसी तरह जो हमारे सहाफी सीनियर सहाफी हैं वो भी इस वक्त अपने फोन जो है वो बाहर रखवा कर जो है वो कमरा अदालत में जा रहे हैं। तो इस पूरी कार्रवाई को जो है वो तमाम सहाफी जो है और जो है वो इसको रिपोर्ट करेंगे। अच्छा निसार आबिद, ये भी बताइएगा, जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह वहाँ पर मौजूद हैं, तो इसके अलावा और कौन कौन से मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं वहाँ पर पहुँच चुके हैं? अब कुछ पहले तक तो जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो इस कमरा अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे और उनके साथ है वो 3 कुर्सियां जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी। और अब देखना यह है कि 3 की जो बेंच है वो कौन कौन से जजेस पर मुश्तमिल बनता है। जी, और लेकिन ये बात कंफर्म है कि ये बेंच है वो 3 रुकनी बेंच होगा। जी, और अब इससे कबल कुछ ये भी इत्तलात सामने आ रही थी कि जो बेंच की सरबराही है वो खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे, तो क्या इसके हवाले से कोई क्लैरिटी सामने आ सकी अभी तक? जी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कमरा अदालत के अंदर जो 3 कुर्सियां हैं वो लगा दी गई हैं। ये बात तो तय है कि यूपी बेंच जो है वो इस केस की समाप्त करेगा, ताहम अभी तक ये कमरा अदालत में जो है वो मौजूद हैं हम, और हम ये देख रहे हैं कि अभी तक क्लैरिटी नहीं हो सकती। पाकिस्तान काजी फाइज उनकी सरबराही में बने कोई 3 जज हैं वो उनकी सरबराही। ये जरूर है कि आज के बाद कल 18 से जो है वो 18 दिसंबर से पाकिस्तान 2 हफ्ते की छुट्टियों पर बैरून मुल्क जा रहे हैं। तो आज देखना होगा कि ये जो 3 रुकनी बेंच है ये 3 कौन से ऐसे जजेस हैं जिनकी सरबराही में आज ये जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिटीशन इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में पहुंची है उसकी समाअत करता है। जी, अच्छा निसार आबिद, ये भी बताइएगा कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से इस केस की नुमाइंदगी कौन कर रहा है? जी, इस जो है इलेक्शन कमीशन की तरफ से चीफ इलेक्शन कमीशन सिकंदर जो है इलेक्शन कमीशन जो है वो इस मौजूद है बाहर मौजूद थे, वो यहाँ पर हुई थी। निसार आबिद से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताते चलें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी सरबराही करेगा। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील जो है वो दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त चैलेंज हो चुका है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर समाअत करेगा। आपको बताते चलें कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई थी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस की समाअत करेगा। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से जो आरओज और डीआरओज की तैनाती का जो फैसला था वो चैलेंज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। आरओज और डीआरओज की तैनाती को जो कलअदम करार दिया गया था उसके खिलाफ अपील जो है वो दायर कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट में। इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। आपको बताते चलें कि अब से थोड़ी देर बाद समाअत जो है वो मुतवक्के है। 3 रुकनी ये बेंच होगा जिसकी सरबराही राय के मुताबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान करेंगे। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है।
लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर समाअत करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट में जो ये केस था इसको बाकायदा तौर पर अब ये चैलेंज हो चुका है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कमरा नंबर 1 अदालत नंबर 1 जो है वहां पर 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा होंगे। आपको इस हवाले से बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कमरा नंबर जो 1 है अदालत का वहां पर 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे। अब तक की ये एक अहम डेवलपमेंट है जिसके बाद आपको ये इन्फॉर्म कर रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो चुका है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल होंगे। आपको बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है जबकि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गया है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कमरा नंबर अदालत का जो कमरा नंबर 1 है उसमें 3 जजेस की कुर्सियां सजा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा होंगे। आपको इस हवाले से बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत करेगा। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि 3 रुकनी बेंच इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत करेगा और इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बताते चलें कि इलेक्शन तकर्रुरियां लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में इस टाइम चैलेंज हो चुका है। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था और इलेक्शन कमीशन की लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा जो है वो इंतखाबात कराने के फैसले पर अमल दरामद कराया जाए। इलेक्शन कमीशन ने ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इस्तदा की है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर वो
समाप्त करेगा। इलेक्शन आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट ने आरओज और डीआरओज की तैनाती को कलअदम करार दिया था। इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर समाअत शुरू हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर बेंच तश्कील दिया गया और अब बाकायदा तौर पर जो है समाअत शुरू हो चुकी है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। कमरा अदालत नंबर 1 में 3 जजेस की कुर्सियां लगा दी गई हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। अब तक की जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस केस के अंदर वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस लेटेस्ट अपडेट के हवाले से यहां पर अपडेट करते चलें। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल है। बाकायदा तौर पर ये जो केस था इसके ऊपर समाअत शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर समाअत कर रहा है। आपको बताते चलें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। ये अहम खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल है। इस वक्त बाकायदा तौर पर ये समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जो है वो शुरू हो चुकी है। आज एक अहम मुलाकात हुई थी चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के दरमियान, जिसके बाद 8 फरवरी को जो इंतखाबात होने हैं उसके हवाले से ये मुलाकात थी और अब सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस 3 रुकनी बेंच में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसकी समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चलें कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच में शामिल है, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच जो है इस वक्त समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच का हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है वो इसके ऊपर समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर अपडेट करते चले कि अपील जो है वो बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुलाकात हुई थी। 8 दिसंबर को होने वाले इंतखाबात के हवाले से चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ब्रीफ किया था। साथ में ये बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट का एक फैसला मौजूद है जिसके में आरओज और डीआरओज की जो तैनाती है उसको कलअदम करार दिया गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ब्यूरोक्रेसी के हवाले से कुछ तहफ़्फ़ुज़ात उठाए थे और ये कहा था कि आरओज और डीआरओज जो है वो ब्यूरोक्रेसी की बजाय उनको जुडिशरी से लिया जाए, जिसके ऊपर 5 रुकनी जो बेंच है लाहौर हाई कोर्ट का उसने 18 दिसंबर को
समाप्त करनी थी, लेकिन आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के दरमियान एक मुलाकात हुई है और इलेक्शन कमीशन ने लाहौर हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है कि इस फैसले को कलअदम करार दिया जाए ताकि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को उसका इनेकाद मुमकिन हो सके, क्योंकि इलेक्शन से जो शेड्यूल है 54 रोज़ कबल वो जारी करना होता है, लेकिन 18 दिसंबर तक क्योंकि इस पेशी को रोका गया था तो वो चीज़ें आड़े आ रही थी। इस हवाले से आज ये मुलाकात थी और अब जो इलेक्शन कमीशन ने बाकायदा तौर पर एक अपील फाइल की थी लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ, तो उसके ऊपर समाअत शुरू हो चुकी है। 3 रुकनी बेंच जो है वो इसकी समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल है। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है और इस बेंच के हवाले से अगर आपको अपडेट करें तो 3 रुकनी ये बेंच है जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान शामिल है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत शुरू हो चुकी है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर बाकायदा तौर पर समाअत कर रहा है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच जो है इसके ऊपर समाअत कर रहा है और जस्टिस सरदार तारिक मसूद और जस्टिस मंसूर अली शाह इस 3 रुकनी बेंच में शामिल हैं। आपको इस हवाले से यहाँ पर बताते चलें कि 3 रुकनी बेंच इसमें ये शामिल है और आपको इस वक्त बताते चलें कि इलेक्शन कमीशन के वकील सुजील सवाती जो हैं वो रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती को जो कलअदम करार दिया था उसके हवाले से सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सुजील सवाती रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती को चैलेंज किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, चीफ जस्टिस ने सवाल किया जिस पर और ये भी कहा कि उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। सिस्टम को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं वकील। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जो है वो इस वक्त जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सुजील सवाती रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती को चैलेंज किया गया है। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, चीफ जस्टिस का सवाल सामने आया और मज़ीद कहा कि उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को ही हों। इस हवाले से आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सुजील सवाती रोस्ट्रम पर मौजूद है। हाई कोर्ट में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती को चैलेंज किया गया है। आपको बताते चलें कि लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर क्या है, चीफ जस्टिस की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। मजीद कहा कि उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस से वकील इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम इस हवाले से कोशिश कर रहे हैं। आपको अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सुजील सवाती रोस्ट्रम पर मौजूद। हाई कोर्ट में आरओज़ और डीआरओज़ की तैनाती को चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है, चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया। मजीद कहा उम्मीद है इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। चीफ जस्टिस कोशिश कर रहे हैं, ये जवाब था वकील इलेक्शन कमीशन का। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि सुजील सवाती इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद हैं, जबकि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की
इस्तदा की गई थी। इलेक्शन कमीशन की अपील पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने की इस्तदा है, जबकि वकील की जानिब से कहा गया है कि कोशिश है कि बरवक्त इलेक्शन के इनेकाद को जो है मुमकिन बनाया जा सके। लाहौर हाई कोर्ट में पीटीआई के उमैर न्यासी ने ये एक दरख्वास्त दायर की थी। इतनी क्या जल्दी हो गई? चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में वक्त बहुत कम है, वकील ने जवाब दिया है, और आपने तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं। चीफ जस्टिस और सुजील सवाती के दरमियान सवालों का एक जो सिलसिला है वो जारी है। तो इसके जवाब में सुजील सवाती ने कहा है कि जी हमारी कोशिश है कि हम इलेक्शन करवाएं। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा है कि जी कोशिश क्यों है, आपने हर सूरत करवाने हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस केस के ऊपर समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील सुजील सवाती रोस्ट्रम पर मौजूद हैं। हाई कोर्ट में आरओज और डीआरओज की तैनाती को चैलेंज कर दिया गया है। वकील सुजील सवाती इस वक्त रोस्ट्रम पर मौजूद है, और इलेक्शन शेड्यूल जो है आपने तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं। चीफ जस्टिस की जानिब से यह सवाल पूछा गया है। जवाब में वकील इलेक्शन कमीशन कहते हैं कि कोशिशें इलेक्शन करवाएं। तो कोशिश क्यों, आपने करवाने हैं, यह जवाब था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और मजीद उन्होंने कहा कि इतनी क्या जल्दी हो गई। चीफ जस्टिस का इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल। इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में वक्त बहुत कम है, वकील इलेक्शन कमीशन का जवाब। तो उसके बाद चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपने तो 8 फरवरी को इलेक्शन कराने हैं, और वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया कोशिश है इलेक्शन करवा दें। इसके ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कोशिश क्यों है, आपने कराने हैं। लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर न्यासी ने दरख्वास्त दायर की है। सुजील सवाती की उमैर न्यासी की दरख्वास्त इंफरादी है या पार्टी की जानिब से है? चीफ जस्टिस का सवाल। उमैर न्यासी पीटीआई के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, और लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 50 और 51 के तहत इसको दायर किया गया है। सुजील सवाती ने यह जवाब दिया, जबकि जस्टिस एजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बने। चीफ जस्टिस ने यह कहा है कि जस्टिस एजाजुल एहसन की कुछ और मसरूफियत थी। जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर जज होने पर घर से बुलाया है। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत जारी है। हाई कोर्ट में आरओज और डीआरओज की तैनाती को चैलेंज किया गया था। लाहौर हाई कोर्ट का ऑर्डर कहाँ है? चीफ जस्टिस का सवाल सामने आया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चले कि इतनी क्या जल्दी हो गई, ये कहना था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। तो जवाब दिया गया कि 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं और शेड्यूल जारी करना है, इसलिए ये जल्दी थी। वकील सुजील सवाती की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया है। आपको इस हवाले से अपडेट करते चलें कि जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर जज होने पर घर से बुलवाया गया है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें हुकूमत ने मुरतब करनी होती हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि दरख्वास्त गुजार चाहते हैं कि रिटर्निंग अफसरान अदलिया से लिया जाए। लाहौर हाई कोर्ट में इलेक्शन एक्ट की दफ़ा 50 और 51 को चैलेंज किया गया। जस्टिस एजाजुल एहसन 3 रुकनी बेंच का हिस्सा नहीं बने। चीफ जस्टिस की जानिब से ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थीं जिसकी बिना पर वो इसमें शामिल नहीं हुए। जस्टिस मंसूर अली शाह को सीनियर जज होने की बिना पर घर से बुलाना पड़ा है। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की ये तैनाती का मामला है, और चीफ जस्टिस ने मजीद इस्तफसार किया कि दरख्वास्त गुजार चाहते क्या हैं। डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान और रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्त हुकूमत देती है, दरख्वास्त गुजार क्या चाहते हैं? चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर से इसी सवाल को दोहराया है। जस्टिस एजाजुल एहसन इस बेंच का हिस्सा नहीं बने, उनकी कुछ ज़ाती मसरूफियात थीं, जबकि उनकी जगह पे जस्टिस मंसूर अली शाह इस बेंच का हिस्सा बने हैं। आपको इस हवाले से अपडेट करें कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इसके ऊपर समाअत कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के वकील से सवाल किया चीफ जस्टिस ने कि इतनी क्या जल्दी हो गई आपको? तो उन्होंने कहा जनाब इलेक्शन शेड्यूल जारी करने में वक्त बहुत कम है। इलेक्शन कमीशन के वकील से फिर चीफ जस्टिस ने सवाल किया, आपने तो 8 फरवरी को इलेक्शन करवाने हैं, और इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि जनाब कोशिश कर रहे हैं, और इस पर जवाब दिया गया कि कोशिश नहीं, आपने हर सूरत करवाने हैं।
लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उमैर न्यासी ने एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि आरओज़ और डीआरओज़ ब्यूरोक्रेसी की बजाय उनको लिया जाए जुडिशरी से, जिसके ऊपर 18 दिसंबर को एक 5 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत करनी है। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार देने के हवाले से एक एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई है और उसके ऊपर अब बाकायदा तौर पर समाअत जारी है। आज के बेंच के हवाले से वजाहत देना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत अब बेंच में तश्कील हैं। I don't know. Let's read it further. Having legal effect deeply connected to the raised national issue, office is directed to place this file before the Honorable Chief Justice for constitution of a larger bench. Page, but he is not passed in an order. My lord, these are the reasons. Para 5, 6 and 8 फिर क्या कहते हैं? 8 is the suspension order notice. Meanwhile, the notification dated सारे के सारे 11 December 2023 issued by the Election Commission of Pakistan appointing the DROs, ROs, assistant returning officers from executive shall remain suspended. Shall remain suspended. So there is a complete. One second, I fail to understand. If a judge is passing an order for constitution of a larger bench, then judicial propriety demands that he stays his hand. Yes. Now how can then he pass an order? Either he passes an order and doesn't say the matter be placed before the Chief Justice, then the Chief Justice has been given a fait accompli. You do what I ask you to do. In fact, either you request the Chief Justice of Constitutional Larger Bench, or you don't make this request and you just proceed with the matter. Yes, my lord. So, has the larger bench been constituted? It has been constituted for Monday. Who is heading the larger bench? The very honorable judge. The same judge? The same judge. 2 other judges. And 5-member bench. This is very strange. So what is the purpose of this petition? In fact, let's look at logically. My lord. Now, who have you appointed? Have you appointed people of some political party as ROs or DROs? No, my lord. Who have you appointed? These are a mix. नहीं एक पे चलते हैं ना. My lord. There are 4 notifications. जी. Let's take the first one. Notifications are at page 27. One at a time करें. My lord. It starts at page 27, my lord. The notification. This is for DROs. These are DROs. 11th of December. So notifications all across the country have been suspended? It's all across the country. In Sindh and Balochistan also? My lord, this notification is across the country. How many DROs in the country? कितने DROs appoint हुए? Per district, every district कितने हैं? Total कितने हैं सारे? 85. अच्छा ये पहला वाला देखिए. अच्छा, I'm told it's 144. It gives the total number, my lord. ये इन्होंने शायद हिसाब लगा लिया. ये जरा कैलकुलेट कर लें कि DROs और AROs टोटल कितने हैं ऑल पाकिस्तान? Total is 148 DROs. टोटल DROs ऑल ओवर पाकिस्तान कितना है टोटल फिगर? AROs is 148. और ROs कितने? AROs हैं. चलिए आप इनको हिसाब लगा के देखें, ऐसे बातें ना करें, कागज के टुकड़े फिगर दे देना हमें टोटल फिगर. गिन के बताइए. 859 ROs. अच्छा नहीं, हम जरा इनके नाम देखना चाहते हैं किसको आपने अपॉइंट किया है. My lord. ये रिटर्निंग ऑफिसर पेज 27 पे कौन है ये लोग? पेज 27 पे आपने पहला बताया ना ये. This is the reserved seat वाला notification. तो देना कौन है DROs किसके ये रिश्तेदार? These are from our own officers. पढ़ देना, डेजिग्नेशंस पढ़ देना, नाम ना पढ़ें. मोहम्मद फरीद additional director general elections 1 election commission of Pakistan. तो ये तो चैलेंज भी नहीं हुआ और सस्पेंड हो गया. ये तो सारे आपके अपने ये तो हमारे अपने हैं. हमने चैलेंज ही नहीं किया पिटिशनर. नहीं किया. उसने तो खाली कहा था कि सिर्फ जो एग्जीक्यूटिव there was a CM file, उसके अंदर ने कहा कि ये वाला भी इंक्लूड करें. Even though the varies is only challenge. तो फिर आप भी इलेक्शन ना कराएं, एग्जीक्यूटिव भी ना इलेक्शन कराएं, जुडिशियल ऑफिसर भी ना इलेक्शन कराएं, तो एक्चुअली ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू होल्ड इलेक्शंस देन. That is prima facie the intent. The varies of section 51B has been challenged. This is under A. Yes. ये तो चैलेंज ही नहीं हुआ ना. और these all have been suspended. ये तो आपके अपने दफ्तर के मतलब अपने इलेक्शन कमीशन के लोग हैं. जी. This notification जो कि रिजर्व शीट फॉर वुमेन के लिए है वो हमारे ऑफिस. अगला वाला पढ़ें. Next is page 29 पे
अब ये कौन है DROs? ये DROs है जी मोहम्मद इरफानुद्दीन, नाम नहीं बताएं, डेजिग्नेशन बताएं। डिप्टी कमिश्नर अपर चतराल। तो ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स हैं जी, सारे डिप्टी कमिश्नर। तो इसमें तो आपने, हम देखना चाह रहे हैं कि क्या आपने कोई पिक एंड चूज की है? नो, ये तो आपने इन फैक्ट एक सेकंड, ये सारे इस पेज पे डिप्टी कमिश्नर्स हैं, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवे, छठे, ये तो सारे डिप्टी कमिश्नर्स। ऑल आर डिप्टी कमिश्नर्स। The DROs are deputy commissioners. They are the तो deputy। इसमें आपने कोई मतलब ये नहीं कि कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट से एक को लगा दिया, हेल्थ डिपार्टमेंट से दूसरे को लगा दिया। No. DROs are all deputy commissioners of the relevant districts। माशाल्लाह। तो अब तीसरा नोटिफिकेशन कहाँ है? तीसरा नोटिफिकेशन है जी पेज 39 पे जी। 39 पे माय लॉर्ड। It's 11th December। Additional Deputy Commissioner General। ये भी सारे आपके एडिशनल कमिश्नर Deputy Commissioner without any discrimination। बल्कि when the नहीं, तो आपने कोई पिक एंड चूज नहीं किया? No। They were posted as. They were posted, already posted. In fact, जब हम the caretaker government came, we issued a directive कि shuffle और the appointees जो कि पिछली वाली governments के थे या वो सारे, and all the deputy commissioners and the higher administrative machinery was shuffled, actually shuffled. So these are actually working. When was that? When was the shuffling? ये different times पे होती है, ये February से शुरू हुई है shuffling करवाने, क्योंकि province of Punjab the election had to take place at that time. Who is the gentleman barrister Umair Khan Niazi? My lord, he says he is the general secretary. Has he attached any authority from the party itself? No, there is none. He's just one individual. One individual person has come and challenged the notifications of all Pakistan DROs. Sabotage the whole process. Is he related to, because the word is Niazi, is he related? I have no idea. I don't know. That's no concern, but and who have been प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, प्राइम मिनिस्टर, इनको भी पार्टी बनाया हुआ है? जी, उनको भी पार्टी बनाया। उनका क्या काम है इससे? प्रेसिडेंट, बिकॉज द प्रेसिडेंट हैड अनाउंस्ड द डेट। तो फिर बेसिकली दे डोंट वांट इलेक्शंस टू टेक प्लेस। द प्रेसिडेंट एंड द इलेक्शन कमीशन टुगेदर, इफ आई रिमेंबर। वो हमारा ऑर्डर किधर है जो हमने पास किया था? दैट इज एट पेज 3rd of January 224 my lord। हां, 2 to 4, page 2 to 4 of the petition my lord। And the speaking, इसमें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज वन ऑफ द petitioner। इसमें तो हमने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है, पेज पैराग्राफ 18 में पढ़िए जी मालूम। पैरा 17 योर लॉर्डशिप। पैराग्राफ 17 या 18? पैरा 17 it starts at पैरा 17 and 18 पढ़ते, वो तो जरा पूरी हिस्ट्री दे रहे हैं। 18 is the President of Pakistan and the Election Commission have announced the date for holding of general elections to the National Assembly and the provincial assemblies. The federal government, the provincial governments and the Islamabad Capital Territory have concurred. The matter of holding the general election on 8th February stands resolved. No one should now put forward any pretext to derail democracy. No, but shall we issue contempt notice? Exactly. No, isn't this word clear? No one should now put forward any pretext to derail democracy. The timing is very important. Sorry, this is Barrister Umair Khan Niazi. Then this is a violation of the Supreme Court order. It's a violation of my. And this petition is entertained and interim order passed, and then the larger bench is constituted, which is again headed by the same judge, the lordship. And so much so, there is a clear verdict, 12-member bench, the provision of the law till it is actually declared. It's Hasan's case कि आप उसको operationally suspend कर सकते हैं। छोड़ दीजिए, हम आइन पे चलते हैं ना। Your lordship, आइन में आप ये किसका काम है इलेक्शन करवाना? इलेक्शन कमीशन। कौन सा प्रोविजन है? 218 and 19 मान लो। 218 and 19 मान लो। Mr. Swati, while we read this, ये जरा बताएं कि petitioner ने क्या कहा कि ये तकरीबन 1000 आदमी बन रहा है ना? जी, समथिंग लाइक दिस। जी, 1014 बंदे। 1014 बंदे जो हैं, इसमें से क्या इनके बारे में क्या प्रॉब्लम है? ये कह रहे हैं जी कि MPOs के ऑर्डर भी यही DCs पास कर रहे हैं, वो तो अंडर द लॉ उन्होंने ही पास करने। ये सारे की सारी मतलब सारे हटा दें और जुडिशियल आपको हो सकता है ना कि ये मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने खास बंदा लगा दिया है। वन ऑफ होता तो शायद वी कुड हैव एंटरटेन्ड दैट कि जी एक बंदा बायस्ड है। यही मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ
इस पिटिशन से फाइल करने से पहले उन्होंने आपको कोई दरखास्त दी, बराए करम ये कर दीजिए? नो, स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट, स्ट्रेट अवे हाई कोर्ट। और अभी 5 दिन पहले 1014 जो भी लोग हैं ये सारे वो क्या कहते हैं पिटिशन में, दे आर बायस्ड। They say कि they belong to the machinery of executive और executive के ऊपर हमारा ट्रस्ट नहीं है। तो इसलिए जुडिशियल साइड से होने चाहिए। वो ये भी कह सकते हैं हमें जुडिशरी पर ट्रस्ट नहीं है, उनके कहने से क्या होगा? In any case, this is part of the law, which somebody could have challenged, and as pointed out earlier, elections have taken place. Yes. तो इस तरह, और कब शुरू हुआ है ये, कब अपॉइंट हुआ और कितनी ट्रेनिंग हो गई अभी तक? What has happened? 11th of December को ये अपॉइंट हुआ है और अभी तक और 3 दिन हमने ट्रेनिंग, there were 7 days training, 3 days training took place, then we had to halt the training in compliance with the interim order. ये बताएं कि why you hold it? Because the notification was suspended. नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, ट्रेनिंग तो सस्पेंड नहीं हुई थी। अगर उनकी ट्रेनिंग हो जाती तो क्या फर्क पड़ना था? ये ऑर्डर कब पास किया इन्होंने? ये कल पास किया 13th को, परसों। And when was the election program due? आज 15th को। ट्रेनिंग एक दिन हुई है सर। ट्रेनिंग सिर्फ एक दिन हुई और 7 दिन की ट्रेनिंग थी। इधर कोई पीटीआई का कोई है? नहीं, हम मुझसे समझना चाहते हैं ना भाई वजह क्या थी ये करने की। नहीं देखें, आप ये भी तो देखें, वो बंदा इंडिविजुअली कर रहा है, नाम वो यूज हो सकता है, तहरीक इंसाफ का नाम यूज करता हो। कौन लोग हैं जो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो? यस, ये बताइए, इसके बारे में बताएं। कौन लोग हैं जो इलेक्शन नहीं चाहते? इस तरह ओपनली कौन कह सकता है कि नहीं? और फिर हमारे ऑर्डर के खिलाफ जब हमने कह दिया कि इसको कोई नहीं डिटेल करेगा, तो कौन डिटेल कर रहा है? पीछे कौन है? We don't know, my lord. This is very strange kind of intervention, I would say. Contrary to law, the timing is very precarious. Constitution पे आप बता रहे थे whose responsibility it is to hold elections? Election Commission, which is that provision? 218 and 219, my lord. तो फिर मेरे ख्याल में जज साहब ही इलेक्शन करवा लें फिर। आप तो क्या उनको कह दें वो इलेक्शन करवा लें? यू नो, सॉरी, वी आर वेरी क्लियर। आपको याद है जब आपकी पिटिशन ये चल रही थी, हमने कहा आपका काम नहीं करेंगे। आपसे मगर हम आपका काम करवाएंगे आपसे। बहुत फर्क होता है दोनों चीजें में। तो फिर मेरे ख्याल में आप अब ये, सॉरी, दिस इज, आई एम रियली सरप्राइज, ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे हैं जुडिशरी से। किधर है वो आपका कौन सा प्रोविजन है? 218 का 3 and 219 का D। 218 3 218 का Swati, in their petition before the High Court, what is the precise allegation against the 1,000 people? क्या है इनको प्रॉब्लम क्या है? They generally attack it कि executive जो है free and fair election नहीं करवाएगी। As a concept, not any individual. No, but not at this stage when the election process has begun. Has begun. आपके पास टाइम था, आप लॉ को चैलेंज करते, जो मर्जी करते। More than 6 years, these 2 provisions had been on the statute book. And the timing is very precarious. Just ये अटॉर्नी जनरल को सुना? एडवोकेट जनरल को जी सुना। एडवोकेट जनरल को, अटॉर्नी जनरल ऑफिस को भी। Were you called for? The additional attorney general was. No, yourself. Gee, notice was under 27A. Notice was issued, but the additional attorney general had appeared. You didn't appear? I did not. Why? To be honest, I was not aware of this petition. I only came to know about the order when the order was passed in the evening day before yesterday. Late in the evening. That's a very serious statement you're making. The Attorney General of Pakistan was bypassed. I was in the Supreme Court. If the judge is there, he should first of all ask where is the Attorney General of Pakistan. I'm going to pass such a very strong order. He should have asked where is the Attorney General, call him, then they could have sought time or whatever. But the office in the Constitution is not of the additional. That's right. There's a very clear demarcation. There is no constitutional provision of additional Advocate General. That's by the law. That's by law. The Article 100 of the Constitution says Attorney General of Pakistan. Did he solicit advice from you? The additional, sir, I've received this notice. What do you want me to do? So Did he did speak with me, and my instructions were to oppose the petition, and it is duly recorded in the order.
No, but आपने कहा आपको बाद में पता चला। मुझे उस दिन सुबह उन्होंने मुझसे पूछा कि इस पे अब क्या होना है। When the order was passed, the morning. नहीं, but ये नोटिस तो पहले दी गई थी, तो पहले क्यों नहीं पूछा उन्होंने? ये उस वक्त मैं उसका It was on a day-to-day fixation, my lord. 13 से पहले एक दिन पहले भी फिक्स हुआ, 12 को हुआ, फिर 13 को हुआ, अगले दिन very next day it was. अच्छा, अगर ये कल बलूचिस्तान में एक पिटीशन फाइल हो जाती है, वो पंजाब के रोक देते हैं, सिंध वाले खैबर पख्तूनख्वा के रोक देते हैं जी। It's very strange. जसवाती ये बताएं कि ये जो पीरियड है 7 days का ट्रेनिंग है, 7 days, and then the program, election program kicks in on the 15th. आप जो होना था नॉर्मल टाइम्स में, जो नॉर्मल टाइम में आज प्रोग्राम आना था, and we were going to continue it in parallel to the issuance of the election and program. when is the actual job of the DRO RO in the program that comes into that's the last date for filing of the nomination. लेकिन वो पहले दिन से शुरू हो जाती है because on the very nothing much has gone wrong in the sense that they can get back to some sort of training. And हम 3-4 दिन पीछे चले गए हैं, but we are very tightly fixed. ट्रेनिंग पे शॉर्ट हो गई जी। लेकिन I remember the last elections when I was Chief Justice in Balochistan. We had conducted the court till 2:45 in the morning. You can say. So these matters on the 11th hour, a petition is filed, not the 11th hour, beyond. And now you are in that danger zone where fallout will be delay of elections. Absolutely, so they were waiting and seeing till that point of no return comes, then file the petition. And doesn't the learned judge realize all these things? Has he assumed the responsibilities of the Election Commission of Pakistan? Would it constitute misconduct on the part of the judge? In fact, it was. If he is violating an order of the Supreme Court. In fact, it was also highlighted. Please assist us. जी, my lord. ये नहीं जो मर्जी you wear a gown and then pass any order you want to. You cannot. When they under Article 189, the learned judge is bound by the. He's not only passed an order in the territory of Punjab. He's passed an order for the whole of Pakistan. Notification. All four the set of notifications have been suspended. इसका कोई जवाब दिया था वहाँ पे? इसका पिटीशन का कोई जवाब दिया? No, my lord, there was none. 12 को फिक्स हुई है और 13 को दोबारा उन्होंने कहा जी कि आके आर्ग्यू करें. I think the best course for the judge was to say that the matter they should approach the Supreme Court in the light of the earlier order. Especially the notification is outside the territory of the Punjab. Very, very true. Hello. Attorney General, does it constitute misconduct? My lord, I have to go through the code of conduct, but if there was a Supreme Court order, provision of the Constitution. Clear provision of the Constitution. Does he refer to an order? No, it does not. And there was a Supreme Court order which. No, he doesn't refer to the order. It does not. He doesn't refer to a constitutional provision. No, my lord. He passes an order beyond the territory of Punjab. So appears, my lord. And my friend has just informed me that the learned additional Attorney General, Attorney General, actually argued this point. No, we may even issue contempt notice to the petitioner. I mean, he's a lawyer. He pretends to be a lawyer at least. How is he acting against the order? If he has a grievance, come to the Supreme Court. We pass the order. He claims to be representing a political party. On the basis of their petition, we had ordered elections. That's right, my lord. So what is this? That's right. So there are two things. One is that perhaps the best course would be that because there was a matter pending here, a direction had been given by the Supreme Court. The best course was for the High Court that take the matter to the Supreme Court. That's one. Number two, the notification is such that it covers all the provinces. That's right. So one High Court dealing with one province cannot deal with that. There is a judgment also which in a CSS matter, the idea was to go to the Supreme Court because you can't upset. I mean, you're actually upsetting the other provinces who don't want to. I believe there's a division bench judgment of my lord was heading the division bench. That's right. Where the CSS exam was challenged, and they said if one province will do it, it will affect the entire exam for all the other provinces. So suppose people sitting in Balochistan and Sindh would like to go ahead, they are also affected. Sara dysfunctional ho gaya. Notifications have been suspended throughout. Attorney General, is he the same judge who had passed that order in the electricity petition?
1600 or 1100 petitions came before us. Yes, Sorry, this is not on. You have to stay within the confines of the Constitution. We take oath to abide by the Constitution, the law, and Article 189 is bound on him, on all courts. I mean, he's really upset our order. He's sort of disregarded our order. I mean, he doesn't even refer to it. He says suspended. His own Chief Justice saying that I can't spare judicial officers because I've got 13 lakh cases in the province. So there'll be a writ issued against the Chief Justice. No. Can't be. Sorry, this is not on. What's the possibility? Could you assist us? I mean, there was an earlier order, and the entire election is being, there was a direction that 8th February ko hoga, and Supreme Court has passed orders that no step would be taken to derail. Yes. So, what is the possibility that if such a case has been filed, that is to be brought before the Supreme Court? Could that case be taken away from the High Court and brought here? There are past precedents, my lord. So that it is heard at one place for the entire country? Yes. Why should we give a relief to a person who is a contemner? I use the word contemner because he is derailing democracy. That's right. Why should this person hold Pakistan to ransom? It's actually an individual. It's an individual, my lord. That's what I'm inclined to, I don't know, I'll consult my colleagues to issue him contempt notice. Once you get the petition here. क्यों उसकी petition को entertain करना? These things are happening. Mr. Swati, जरा 51(1) पढ़िए जरा. This is relating to the 51(1) में फिर ARO और RO of the judicial. 51(1) जो है वो deals with the इधर चेक करें, ये लॉयर हैं, ये बैरिस्टर उमेर खान नियाजी. He is an advocate, sir. He is an advocate of High Court, yes. Yes, you know him? Yes. Which, is he alone with some firm or what? My lord, he had previously served as a law officer, as an additional advocate general in Punjab, but he was associated with Tehreek-e-Insaf. He was president of, as it is written in the memo of the petition, also he served as the president of the lawyers wing of that party. He's not a young man then. He's about as old as I am, so. That's young now. So a young man. So he's not like in his 20s. No. That on his exuberance, he files a petition not realizing what he's doing. My lord, 51(1) provides for consultation with the Chief Justice for appointment of the judicial officers. 51(1). The Commission shall, in the prescribed manner, appoint from amongst its own officers or officers of any government or corporations, autonomous or semi-autonomous bodies controlled by any government, or from the subordinate judiciary in consultation with the Chief Justice of the concerned High Court, a returning officer for each constituency. This is the provision which has been. अगर 51(1) को कोई कोर्ट अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर कर दे तो क्या कभी इलेक्शन हो सकता है? नहीं. Then we have no other power. 50 को छोड़ देते हैं. 51(1) को अगर मुकम्मल अल्ट्रा वायरस कर दें तो ये इलेक्शन कभी भी नहीं हो सकता. फिर डिरेलिंग करना कहना, आप ये कहें कि इलेक्शन ही नहीं कराना चाहते. इलेक्शन नहीं करवाना चाहते. तो ये तो इन्हें पिटीशन ग्रांट कर दी रहा है, क्या किया फिर इसमें? This is the main relief granted at the interim stage, which is also unconstitutional, unlawful. अच्छा, आपके पास कोई दरखास्त नहीं दी? No, my lord, no, my lord. There was nothing of this sort ever agitated anywhere in the whole. देखिए, हो सकता है कहीं गलत हो गया हो, किसी का भाई वगैरह को अपॉइंट कर दिया एज RO, चलें, हो सकता है. तो इंडिविजुअल का अगर किसी एक की करे वो कहेगा जी आप ये बंदा गुनाहगार है, दूसरे को लगा दो, हम लगा देंगे. 1,500 बंदा ही बायस्ड है इनके अगेंस्ट, और इनके अगेंस्ट नहीं, जस्ट अगेंस्ट वन इंडिविजुअल. Probably he might be contesting from one constituency. आप उसके हद तक करें अगर आपको प्रॉब्लम है. Come to us, we will look into it. वो ये भी नहीं बता रहे कि उस ऑफिसर में प्रॉब्लम क्या है. No. They're saying कि as a concept executive नहीं होगा. As a concept, चूंकि हमारे अगेंस्ट MPOs के ऑर्डर्स की हैं डिप्टी कमिश्नर्स ने, तो इसलिए जो हमारे अगेंस्ट पार्टीजन है. This is the allegation. ये बताएं कि RO और उनके खिलाफ कोई किसी को कोई बायसनेस हो तो आपके पास उनका आने का कोई है लॉ? जी, कौन सी सेक्शन है कि उनको आपके पास आना चाहिए कि ना कि डायरेक्ट में जाना चाहिए?
अगर रेमेडी आपके पास थी तो वहाँ आए नहीं आए? आपके पास नहीं है? They've never approached us. तो है कोई प्रोविजन बताइए? It's 50, not 55, it's 55 का 3 है. Which? Election Act का 55 का 3 जी. The Commission 55(3). Section 55, subsection 3. The Commission may at any time for reasons to be recorded in writing suspend or withdraw any election official. A public servant, कौन सा पढ़ रहे हैं? 55, section 55, subsection 3, my lord. Yes. The Commission may ये at तो any पावर time for है, reasons. तो आर्टिकल 199 जरा पढ़िए आइन का, ये तो वही मार खा जाएगा। जी Alternate remedy. Last time the same learned judge passed the same order, कितना नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तान को? Sir, I think the total was few hundred billions. I don't remember the exact number, but few hundred billions actually. तो बिजली वाले 500 billion or something. हाँ? About 500 billion. Then again नेपरा को उन्होंने बाईपास करके ऑर्डर कर दिया। Subject to the Constitution, a High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law. Adequate remedy There is a आपके law में- rider, adequate remedy is there. और in fact, ये assessment के कोई biased है या नहीं है, वो भी किसी कोर्ट ने नहीं करना. ये खुद या तो क्या वो इलेक्शन कमीशन ने करना है. Through their long arm of the people, they work under election commission because we have got people even at the lowest strata लॉन्ग आर्म तो लॉ की होती है आपने of the election commission पे वो भी थोड़ी कम कर लें। तो शॉर्ट आप कर लेते. खाइए वायलेशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। It's 204 man. नहीं वो तो आर्टिकल है ना, Article 204. And section 3 of ये the तो जुडिशियल कंटेम्प्ट हुआ ना। And section 3 of the contempt of court. जरा पढ़ दें आप, जरा दे दें इनको किताब। हद हो गई। But you can get back onto the rails. अच्छा, आपने शेड्यूल क्यों नहीं yes. अपॉइंट, अभी तक आपने शेड्यूल क्यों नहीं दिया है इलेक्शन? मतलब आज देना आज नहीं, आज आप देंगे ट्रेनिंग के बाद हम नहीं, इलेक्शन शेड्यूल की बात कर रहा हूँ। शेड्यूल इलेक्शन प्रोग्राम जो है अब we had planned it after the training or the Training can still continue on the Where is the side. schedule? Show me the schedule. I don't have the schedule. ट्रेनिंग तो आपने रोक दी। ट्रेनिंग कुछ और चीज है, शेड्यूल तो कह रहे हैं कि आप उसका शेड्यूल करेंगे, इसमें कोई बात तो नहीं है। शेड्यूल किधर है आपका? Schedule we can bring. We didn't bring it. बताएं ना, schedule we wanted We were going to issue the schedule today. It must be ready somewhere, lying somewhere ना, तो दिखा दें. Who is the gentleman behind you? He's the secretary election commission. तो It had already been drafted. It's you'll issue it today? No, let's let them bring it. The Lordship, the idea was to issue the schedule right after the training, which has... Why What is the connection between the two? That was what the commissioner decided, that they will issue it No, right but after the Mr. training. Amir, you would have, There must be some connection. and you must have drafted a schedule. Program तो बन गया होगा ना, आप इंतजार तो नहीं कर रहे. इस दिन नॉमिनेशन पेपर देना है, इस दिन ये करना है, जी, वो section 57 के तहत, you where is that schedule? that schedule is counted 54 days Where backwards. is the schedule? We have it, sir. show it to us. We have the draft. No, when will you issue it? It was supposed to be When will you Right issue after it? training, sir. right after the training. When will you issue it? Originally, sir, it was supposed to be When will from you 13th issue? to 16th, the training. Not Wait, please, if you're going, As your Lordship if they are going to mock the law, if the election commission is going to mock the law, show us the law which says schedule will be issued after training is completed. But I refer to that provision. No, it says simultaneously. Show us that provision. Training can go on the side. That is just Training can go on till the election day
it you can continue training It people? says simultaneously with the. Where is the law which says training of officers? So, Mr. Swati, you have not read this to the Election Commission earlier? No. This section 52 of It says the simultaneous section. तो फिर इनको बताइए। It can go parallel. 52 exceptional circumstances में कहते हैं। Otherwise, आप जो कह रहे हैं शेड्यूल की लाजम है कि हम पहले ट्रेनिंग करेंगे, ये कहाँ लिखा हुआ है? ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ। तो बताइए क्यों कह रहे हैं? 60 days in ordinary circumstances before the election program. Since delimitation was. आज 8 फरवरी को अगर बैकवर्ड्स करें तो आज कितने दिन रह गए? आज today is the 55th day. 55th day. 55वां दिन आज। कल से 54th day. आपको मिनिमम कितना चाहिए? 54 days. तो you have to issue the schedule. You have to issue the schedule today. Today. Yes. Today. या तो फिर सबको बुला लीजिए, फिर आप भी वायलेट कर रहे हैं अपना लॉ। नहीं, so we were going to. Are you making a definite statement? You're issuing it today or not? अभी we have your schedule ready. Issue it. Hey, if you are so keen on elections, why are you backing off now? We're not backing. I mean, training, Mr. Umar Hamid also, training is just a capacity building which can continue. एक दिन लेट होगी, 3 दिन लेट, आप ट्रेनिंग करा दें, रात को एक्स्ट्रा करा दें। So the idea was, if you allow me, sir, the idea was that we will complete the training between 13 and 16 and 16 पे करेंगे. Now what has happened is that we've gone a little like 4-5 days ahead. 4 days. So that was the idea of the commission. If you allow the commission. आप एक मेरी बात सुनिए, आपको आरओ और डीआरओ की जो एक्चुअल जरूरत है इस प्रोग्राम में, शेड्यूल में, तो भी आगे जाके ना कहीं। नहीं, आगे जाके नहीं। When is the first time they required to work? क्योंकि nomination, the last date for nomination हमने शेड्यूल में देना है। कब है? अगर 57(2) का A देखें ना। आप बताएं, डेट बताइए ना। How many days do we have from today to that first assignment that DRO has to perform? That's the 6th day from the issuance of the election program. ये 57(2) का A लिखा हुआ है। तो पहले दिन भी first day पे, very first day पे भी nomination आके सबमिट हो सकते हैं। तो ठीक हो गया ना। अभी 1-2 दिन की ट्रेनिंग होगी, आपने 4-5 दिन की और ट्रेनिंग करानी है, करा लें, उसका तो कोई मतलब you can रोकी नहीं है। देखें, ट्रेनिंग ब्लाउज आपने रोकी है, ट्रेनिंग को जारी रहने देते, कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो खाली उसकी हद तक था, आपने पता नहीं क्यों रोक दिया। आप यहाँ पे आप भी नहीं चाहते कि नहीं होना इलेक्शन। बेसिकली इसको आप तो देखो, अगर आपने करने के लिए सीरियसली है तो आप उसको कैरी ऑन करें। असल में नोटिफिकेशन वो सस्पेंडेड, तो इस वजह से वो एज नोटिफिकेशन सस्पेंड हुआ, आपने भी कोई नोटिफिकेशन जारी कर दी है? Suspension of the notification of the appointments, which is the ipso facto of what the. आपने क्यों किया है? Why? आपने क्यों किया? Why you issue the notification for suspension of? आपने क्यों किया? आपको कहा था कोर्ट ने कि आप ये करें। सर, जब आरओ जी सस्पेंड हो गए तो फिर नोटिफिकेशन। आरओ सस्पेंड हुए हैं, फर्ज करिए अभी हम उसको विड्रॉ कर लेते हैं, आपका तो नोटिफिकेशन रहेगा, वो इन पीरियड रहेगा ना। Immediately we will, sir. Why you immediately? Why you issue it? तो that was done in compliance of the suspension order. भाई compliance कोर्स किधर लिखे हुए compliance करें? किधर कहा है कि आप इशू करें? उन्होंने सस्पेंड कर दी, सस्पेंड हो गए, खत्म। Why you issue? आपने क्यों इशू किया? My lord, we in compliance. I think that was being unnecessarily. जब कोर्ट ने ऑर्डर ने सस्पेंड कर दिया तो आपको सिर्फ कहना है कोर्ट ने सस्पेंड किया है। मतलब I think you just did an extra thing which is not required in law. There was a confusion because everybody was calling us up and asking us, so we had to in compliance deference to the court order. Deference to the court order हमने जो है ये भी लिखा हुआ, it has affected us. लिखा हुआ, it has affected us negatively. कंफ्यूजन नहीं है, कंफ्यूजन इससे रिमूव नहीं होती जैसे आपने रिमूव की। कंफ्यूजन तो थी, ऑर्डर लिखा हुआ है, ठीक है। We got the order. There are notifications suspended by courts usually. Doesn't mean that FBR issues another notification saying now then all of my notifications suspended. ऐसा तो नहीं होता. I think this is just an extra care में totally unnecessary exercise जो आपने की है। May I just respectfully submit, whenever there is an order by any court, yes, then whatever actions we have already allowed to go on, we hold those in abeyance. And when the court or the higher judiciary gives us another order, then we restore it accordingly. That was all. Whenever there is, for instance, if there are delimitation cases, because our own people are on the ground, they have to be given some orders by the commission also. That was the reason.
लिखें। अच्छा, आपने स्टे भी मांगा है। स्टे एप्लीकेशन नंबर इज 10612 केस यू वांट इट। We'll correct the order. I'm pretty exhausted by now. My apologies, my lord. No, it's good that you come. It's not your fault. This petition for leave to appeal assails the order of a learned single judge of the Lahore High Court, Lahore, dated where is the order gone? Page? Page 10, my lord. 15th of December. Page 10 पे 13, 12, 23. 10 पे 13, 22, 23. 13/12/2023. 23. Full stop. The impugned order was passed on the petition, writ petition filed under Article 199 of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, within bracket, Constitution, bracket close, wherein the Election Commission of Pakistan, wherein the two petitioners before us and 8 others all the petition sought the prayed for they sought a declaration that sections 50 within bracket 1 bracket close within bracket small b and 51 within bracket 1 within bracket closed of the Elections Act, 2017 was unconstitutional, void, without lawful authority, and of no legal effect. The two provisions which had been assailed are reproduced hereunder. The petition further prayed. The said provisions Section 50 pertains to the appointment of district returning officers by the Election Commission of Pakistan, bracket में करते हैं ECP, and Section 51 of the appointment of returning officers and assistant returning officers. Full stop. The petition stated that instead, it is submitted by Mr. Sajil Shahryar Sawati, learned representing the petitioners, that the stated two provisions of law have been part of the Elections Act, and
subsisted at the time when the last elections were held. And till date, no one has taken any exception there too. Full stop. It is further submitted that this court, right, video italics में कर दीजिएगा. Its order, where was that order gone? 224 page. Huh? 3rd of November. The page? 224. 224. Right. 3rd of November. Right. Judgment dated 3 November 2023, tending to a number of constitution petitions filed in this court, wherein the Pakistan Tehreek-e-Insaf, within bracket PTI, was also one of the petitioners, oblique appellants, had sought that a date for holding of elections be announced. Full stop. Pursuant to the notice being taken by this court, the President of Pakistan and the ECP met and decided that general elections should be held on 8 February 2024. Full stop. The federal government, the provincial governments, and Islamabad capital territory, all of whom were represented before us, concurred. This court held that, begin, no one should now put forward any pretext to derail democracy, closed, bracket mein kar dein, paragraph 18 of the said judgment, bracket close. Full stop. The Learned Council submits that to enable elections to be held, to ensure elections are held on 8th of February, the certain number of days are required to do the different acts which the law requires prior to the holding of the said elections. And the passing of the impugned order at the 11th hour, if it remains in the field, would make the holding of elections on 8 February, would not permit the holding of elections on 8 February 2024. Full stop. It is further stated that the ECP had drafted the schedule for elections. What do you call it? Program for elections. Election program. What is it? Under which section? 457. Had drafted the election program, capital E, capital P, which it was intending to announce today. But the passing of the impugned order has made this, passing of the impugned order, that if the impugned order is sustained, this will not be possible, as without having district returning officers and assistant returning officers
election cannot be held. First off, he further states that the learned judge acted in undue, that the learned judge has effectively decided the petition. That there is an inherent contradiction in the impugned order, because where is the impugned order page? Page 10, my lord. Because in paragraph 7, he states that this file states, inverted commas begin, to place this file before the Honorable HON'(BLE Chief Justice for the constitution of a larger bench, capital L, capital B, inverted commas closed. And at the same time, in the successive paragraph 8, he suspends four notifications issued by the ECP, particulars whereof are as under. ये numbers ले लीजिएगा, उसके लिख दीजिएगा. My lord, actually, please sit down. Who are you? You are dictating an order. Please sit down. Seems to be no respect for anybody anymore. Next time you do it, we'll hold you in contempt. Who are you, a lawyer? Where have you studied? Please go and sit at the back. I don't know what's happening, what sort of education is being imparted. Supreme Court is dictating an order and she comes and stands up. Is she with you? She is not an advocate of this court, shouldn't have addressed the court. I don't know. No, is she with you? No, we don't know. The first, which respectively appointed 8 returning officers for the seats reserved for women and non-Muslims, 144 district returning officers for elections to the National Assembly and Provincial Assemblies, 266 returning officers and assistant returning officers. ये भी National Assembly and Provincial Assembly for elections to the National and Provincial Assemblies, and 593. ये क्या चीज है? 260 national करने और 593 returning officers and assistant for provincial assemblies for elections to the provincial assemblies. As such, altogether 1,011 district returning officers and returning officers have been have stopped working off कर दें. Their working has been stopped with the stroke of a pen by the learned single judge. The learned single judge also did not fail to appreciate that the officers that had been appointed were to perform functions throughout Pakistan, and in passing the impugned order, the learned judge acted
well beyond the territorial jurisdiction of the High Court. Full stop. As if this was not enough, the very opening words of Article 199 were disregarded by the learned judge insofar as it stipulates that when there's an alternate adequate remedy available to the petitioner, the same should be availed of first. We are informed that Section 55, subsection 3 was such a remedy. If the petitioner had a grievance against any particular returning officer or officers, we inquired from the petitioners whether any application was submitted before the PCP under Section 55(3). That is availing of the alternate adequate remedy, and we were told that this was not done. The petitioner states that he is an office holder of the very same political party, that is PTI, which was before this court when the said judgment was passed, wherein no such concern as expressed in the petition filed before the High Court was stated. Full stop. The petitioner also claims to be a barrister, and as such is expected not only to be well conversant with the Constitution and the laws of Pakistan, but to have read the judgment of this court, which had clearly stipulated that any attempt to derail democracy would, what was the line exactly? Where was our judgment? 224? No, it's at page 231, paragraph 18 at page 231, the last line of paragraph 18 at page 231. That no one would, no one should be allowed to, on any pretext, to derail democracy. Full stop. One individual as, however, one individual appears to have done just that, and it is indeed a matter of considerable regret that he claims to belong to a political party. And has served in such political party, and we are told that he served as an additional advocate general when the said political party was in government. Full stop. We, in view of the conduct of the petitioner, we call upon him to submit an explanation why action for contempt of court should not be initiated against him for judicial contempt. Lord, it should be, it would be civil contempt, my lord, this disregarding of the court order under section for contempt लिख देते हैं वो under the contempt order. under the contempt of court ordinance, 2003, read with article 204 of the Constitution. Full stop. The learned judge, acting in undue haste and at the 11th hour,
that if returning, that we saw the list, that the Learned Council went through the list of returning officers appointed pursuant to the 4 notifications and stated that they were all, that in one of these notifications pertains to the officers of the ECP, whereas the remaining 3 are all serving government servants who already were holding their respective positions and have not been put in place for the purpose of this election or on anyone's behest. Full stop. The petitioner, the petitioner before the High Court also, Learned Council further states that the that initially the ECP had pursuant to section 51, pursuant to 50 subsection 1 clause C and 51(1). And 51 within bracket 1, written to the Chief Justices of the 5 High Courts and requested them to provide judicial officers for the upcoming elections, and not a single one of the Chief Justices agreed to do so. He has referred to a letter issued by the Lahore High Court, which specifically stated that वो लेटर किस पेज पे था? 211 to 10 से 211 210 210 6th of February. नहीं वो आपका नहीं, reply 210 reply to 210 to 211. Emphatic reply was given that no judicial officers can be spared because there are over 1.3 million cases requiring adjudication, approximately. About 1.3 million cases requiring adjudication, and delaying and provision of such officers would result in the tendency to increase and of which the ultimate sufferers would be the litigants. Full stop. Under such circumstances, for the petitioner to insist on judicial officers to be provided would effectively mean that a writ be issued against the High Court, which is not permissible under Article 199. Clause 5. 199 clause 5. But this is the Chief Justice. And in this regard, he placed his reliance upon the case of Gul Tez Khan Marwat. Gul Tez Khan. You have to come to the Supreme Court. And versus Registrar Peshawar High Court, PLD 2021, Supreme Court 391, which was a judgment by a 5-member bench of this court. इसमें हमने क्या किया? इसमें कहा कि रेपुटेड नहीं है हाई कोर्ट के अगेंस्ट. हाँ? That becomes a wonderful thing.
The only remedy in such a case, according to this judgment, is to approach this court. And it was held therein that since the only remedy, that if at all there was any remedy, it would be to approach the Supreme Court of Pakistan, which judgment appears to have also been disregarded both by the petitioner as well as the learned judge who passed, the learned single judge. Full stop. Under the circumstances, it would be appropriate we hereby direct that What's the number of petition? The High Court petition, it's writ petition number 80828/2023 be what? Yes, Be called from that the High Court should not take any further proceedings in WP number 80828/2023, and the same be placed before and the same be sent to the Supreme Court, and if it is deemed necessary, this court will fix it for hearing. What is court? Full stop. In view of the fact, ordinarily, this court does not pass. It does not suspend orders without issuing of notice, but in view of the fact, that the impugned order has come into direct conflict with the judgment of this court, and as the petition as filed appears not to be maintainable, we are doing so. Full stop. Impugned order also comes in the way of the Election Commission to proceed with its duties and responsibilities, constitutional duties and responsibilities for the holding of elections as mandated under the Constitution. What can we refer? Schedule का use. Without further delay, order में suspend कर दिया ना? कर दिया? देखा है? हाँ? Accordingly, in the given circumstances and considering the constitutional and legal stipulations and the judgment of this court, judgments of this court, the impugned order is hereby suspended and full stop. The Election Commission we are informed that the Election Commission had prepared the election program which was supposed to be issued today, and in view of the impugned order it had not done so. However, since the impugned order has now been suspended, the Election Commission shall issue the election program today. Tonight, kya? Today? Yes, please. Within the day, be please. Whereas the law mandates. You should be saying that आपने ये करना है ना. ये नहीं करना तो बता दें. We are all ready, sir, as per your directions.
हम तो नहीं कहेंगे, हम आपसे अपना काम करवाएंगे या आपके हमें काम करना नहीं आता है, जो आप कहें हम कभी किसी को नहीं कहेंगे, उससे काम करवाएंगे उसका। ये विदाउट फेल वी विल इशू द इलेक्शन प्रोग्राम विदाउट फेल। undertaking is given on behalf of the election commission that the election program will be issued today. समझे आपने? और वो भी कि वो जो आपने नोटिफिकेशन किया था उसको भी आज विड्रॉ कीजिए, वरना तो नहीं चल सकेगा ना। वो विड्रॉ वो नोटिफिकेशन कहाँ है? The notification of the election issue, a notification issued by the Election Commission of Pakistan pursuant to the impugned order of the High Court is also suspended. सर हम नहीं वो आप करेंगे नहीं, अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान states that since the impugned order has been suspended, it will be ECP will be withdrawing the क्या नाम है उसका notification dated 14/12/2023 का कोई नंबर भी है? नंबर बता दें। नोटिफिकेशन नंबर F2 और ये पेज 234 पे लगा 35 दो है ना? अच्छा तो हाँ 34 and 35 34 and 35 इलेक्शन 34 and 30 नहीं ये नहीं है, 234 पे 234 पे ये नंबर लिख देना, इसका नंबर शंबर और डेट भी लिख दीजिएगा। दोनों नेक्स्ट पेज पे भी है, नाउ 235 पे भी है दोनों, सेम डेट इवन डेट। तो इसमें नोटिस किसको करें? वो कह रहे हैं कि 234 ये वाला नोटिस टू द रिस्पॉन्डेंट एंड पेज 235 दोनों पे लिखिए, दोनों पे नोटिस हम किसको करें? ऑल द रिस्पॉन्डेंट। बाकी को क्या करने की जरूरत है? रिस्पॉन्डेंट नंबर 1 वही वो पिटिशनर था ना, इशू नोटिस टू let notice of this petition be issued to the petitioner before the High Court, that is respondent number 1 herein. My lord, we will resume the training on Monday onwards. This is what the learned secretary is saying. Tomorrow. May I just submit? No, please don't. Just do the law, abide by the law, hold. Sir, may I just submit, if you allow me, sir? So it's a huge logistical exercise. All the DROs, ROs have to be brought to the venues. The venues have been cancelled. We have to, just the delay of. नहीं हमें देखिए मंडे का सिर्फ हम कुछ नहीं लिखेंगे सर, हम ना कल का लिखेंगे ना मंडे का लिखेंगे। आपका जो काम है आप करो, आप देखिए हम आपको माइक्रो मैनेज नहीं करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हम मोटी मोटी बात करेंगे। आपने कहा जी हम इलेक्शन करना चाहते हैं 8 को, जी इंशाल्लाह। हमने तो नहीं कहा, आपने कहा है ना। आप और सदर साहब ने मिलकर के तयन कर लिया कि 8 फरवरी को करना है। हमने कहा आपको इलेक्शन 8 को करें, हमने आपको कहा क्या? ठीक है, जब आपने ये काम कर लिया, जो भी चीजें वहां तक जाने के लिए करने को हैं वो आप करें। कल को आप कहेंगे जी सुप्रीम कोर्ट ने ये कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने वो कर दिया और हम ये नहीं कर सके तो वो नहीं कर सके। भाई जो कुछ करने करें। अब आपके सामने एक मसला था, रुकावट थी, वो रुकावट और वो मसला हमने दूर कर दिया। अब आप अपना काम कीजिए, हम लोग अपना काम करेंगे और अगर इजाजत दें तो मैं फिर छुट्टी पे जा सकता हूँ। My lord, just have a great vacation, sir. I'm just detaining you for 30 seconds. Notice may also be issued to the federation. Oh yes, yes. A notice be also issued to the federation of to respondent number 5, as well as notice under our Order 27A of the Code of Civil Procedure 1908 to the
अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल को भी करने हैं, एंड द एडवोकेट जनरल्स ऑफ द 4 प्रोविंसेस। इस्लामाबाद का कौन होता है? तो भी होते हैं, बट एडवोकेट जनरल कहते हैं फेडरल लॉ है तो वो एंड इस्लामाबाद टॉकिंग टेरिटरी। चलिए, anything else, gentlemen? I have liked it. Apologies once again for No, it's not your doing. You are before us, but we must, at least I must compliment you for being so thorough in a very short period of time, and which is always a pleasure to have counsel who are ready with their case, particularly at such. में भी ऑर्डर पर करिएगा, ठीक है? हाँ, हाँ, वो वाली ग्रांट कर दें, वो एग्जेम्पशन वाली, ठीक है? And also, my lord may also wish to grant the leave, and then the leave may also be granted because it's a CPLA, so a leave has to be granted. Okay. The points, pulling in points. Now you can see I'm very tired. The points raised above, in क्या होता है? Leave is granted to consider, amongst others, the noted points. You notice different. Thank you. आपको बता रहे हैं कि लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसको मुअत्तल कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट का। आज ही इलेक्शन कमीशन को आपको इस हवाले से अहम खबर दे रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन को आज ही शेड्यूल जारी करने के हवाले से भी हुक्मनामा जारी कर दिया गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी करवा दी है। क्यों ना लाहौर हाई कोर्ट के फैसला देने वाले जज के खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट को केस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया है। अब तक की अहम डेवलपमेंट है सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म सामने आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी करा दी। क्यों ना लाहौर हाई कोर्ट के फैसले देने वाले जज के खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट को केस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश करने का हुक्म दे दिया है। 8 फरवरी को इलेक्शन के हवाले से यह अहम पेशरफ सामने आ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। आरओज और डीआरओज की तैनाती के हवाले से यह फैसला था जिसको मुअत्तल किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी करवा दी है। मजीद चीफ जस्टिस ने कहा कि क्यों ना लाहौर हाई कोर्ट को जो है फैसला देने वाले जो जज है उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। लाहौर हाई कोर्ट को केस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी करवा दी है। क्यों ना लाहौर हाई कोर्ट के फैसला देने वाले जज के खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट को केस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म भी सादिर कर दिया गया है। आपको इस अहम डेवलपमेंट के हवाले से यहां पर अपडेट करते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म सामने आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया है। इलेक्शन कमीशन ने आज ही शेड्यूल जारी करने की यकीन दहानी करवा दी है। क्यों ना लाहौर हाई कोर्ट का फैसला देने वाले जज के खिलाफ हम तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। लाहौर हाई कोर्ट को केस रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट में पेश करने का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको बताते चलें कि सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को शेड्यूल आज ही जारी करने का हुक्म दे दिया गया है।
फिलवक्त न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद खबरों और उनकी तफसीलात के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। वीडियो कॉलिंग हो या नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग, अब मिलेगा मोर से ज्यादा डेटा विद वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर, जो दे 80 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर मिनट्स और 300 अदर नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 380 रुपए में। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। सर्विस अच्छी हो तो भरोसा बन ही जाता है, इसलिए पैसे घर भेजने के लिए सिर्फ अलाइड एक्सप्रेस। जदीद ऑटोमेशन सिस्टम बैरून मुल्क से पूरी रकम पहुंचाए बिना किसी ताखीर के, जो वसूल हो एलाइड बैंक की किसी भी ब्रांच से, और पाकिस्तान में एलाइड बैंक या किसी भी दूसरे बैंक अकाउंट में फौरी रकम ट्रांसफर करने की सहूलत भी। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। वीडियो कॉलिंग हो या नॉन स्टॉप स्ट्रीमिंग, अब मिलेगा मोर से ज्यादा डेटा विद वीकली एक्सट्रीम प्लस ऑफर, जो दे 80 GB डेटा, 15,000 टेलीनॉर मिनट्स और 300 अदर नेटवर्क मिनट्स, वो भी सिर्फ 380 रुपए में। तो अभी अपने करीबी रिटेलर या माई टेलीनॉर ऐप से ऑफर लगवाएं। JS प्लैटिनम बिजनेस करंट अकाउंट से टेंशन हटाओ, बिजनेस बढ़ाओ और माली मामलात आसान बनाओ। व्हाट्सएप बॉट, मोबाइल एंड